Okay, so to just give you a recap, this is the daily page of the almanac where you have the daily prediction. This is the diagram which we get in volume 1 for each and every standard port. A different diagram is used. This is the diagram for Antwerp. So two lines which you see here, the dotted line and the solid line. Dotted line represents the NAPES range, that is 4.0 meters in this case, and the solid line represents the spring range, which is 5.5 meters in this particular port in this case. Then different items which are given in this diagram. You have the high water time in the middle, plus shows interval after high water, minus in the values shows interval before high water. Then you have a scale on top, that's the high water scale. You have a scale at the bottom, that's the low water scale. Mean curve is solid line, spring curve is solid line, and the NAPE curve is the dotted line. Then we did this particular question, beta. This was the question which we did last time. Height of tide at Antwerp at 0630 hours on 2nd January 1992. So what we did was we first went into the geographical index, found out the page number where this port is. So that is page number 182. Then we went to this 182 page number. From there we obtained 2nd January 1992, the times as well as the heights. And using these heights, we calculated the duration of tide, that came to 6 hours 42 minutes, and the range of tides, that is 4.3 meters, high water minus low water. Then for the time which is required, that is 0630 hours, we calculated the interval. Interval came to 5 hours 11 minutes after high water. So first we drew the interpolation line. At the bottom you see the low water height in meters, that is 0.8 meters. At the top you see the high water height, which is 5.1 meters. We joined them together to get this green line. Then 5 hours 11 minutes after high water. So you see we went to plus 5 hours and 11 minutes. From there we went up. Now we picked up a point in between the dotted line and the solid line. How did we pick up this point? The dotted line shows a range of 4 meters. Solid line shows a range of 5.5 meters. And our range was 4.3 meters. So by visual interpolation, you can interpolate it, calculate it by the calculator also. So it can be done visually also. We stopped in between these two lines and then we drew a horizontal line. So a horizontal line which touched the interpolation line at this point, then you can go up or down and you can read off the height of tide, which came in our case as 1.75 meters. So this was the first question beta which we did. Everybody remembers? Yaad aa gaya beta? Yes sir. Yes sir. Okay. All right. So shall we move ahead to the next question? Yes sir. Please. Okay. Now this next question is based on Dover. Last time मैंने जो आपको photocopies लेने के लिए बोला था, Dover was one of them. So you must be having those photocopies with you. So we will be using that. So you can keep your calculators close by, the tide tables and the photocopy of the pages. So just keep all these items close to you and we will go into this particular question.
If you are ready, then we will start off. Sir, question note down करो. Okay, beta, okay. You can. Yes, sir, noted down. Okay, let's go ahead. Been visited. I think we can now run through a couple of more examples. Find the earliest time after 0600 hours on 3rd March 1992 when the depth of Dover with charted depth has 5.4 meters be 10.3 meters. That means when will the depth be 10.3 meters at a place where the charted depth happens to be 5.4 meters. Okay, so basically the question is, they say there is a particular spot close to Dover where the charted depth is 5.4 meters. Now we want to find out what is the earliest time after 6 o'clock on 3rd March 1992 when the depth at this particular location will be 10.3 meters. So this is the question. Any doubt in the question, beta? सर बेसिकली हमें हाइट ऑफ टाइड दी हुई है ना. That's right, beta. We can calculate what is the height of tide. It will be 10.3 minus 5.4. That is 4.9. That's right. Okay, sir. Okay, let's go. So we repeat the first couple of steps. We go to the geographical index of ATT Volume 1, alphabetically arranged, reach Dover. And what do we find? Dover is in caps, capital letters, is in bold. Its number is 89. By virtue of being in capitals and bold, Dover is a standard port whose predictions are on page 22. So now we go to page 22 of ATT1 and from page 22, we extract information for 3rd March, which is the date of interest. So here is the predictions for 3rd of March, and these are magnified here for us to use. So this is how the first step is completed. So beta, you can open up your tide tables and you can follow these steps. Go to the geographical index first, look for Dover, get the page number, go to that page and look for 3rd March 1992 times and heights, and you have to note this down in your notebooks. So let me know once you are done. Okay, great. So let's move ahead. We have the times on 3rd and we have the heights. 0543 we have a low water 1.1 meters. 1041 we have a high water 6.0 meters. 1800 1.2 low water, 2252 6.3 high water. So let's proceed. So now in this case, we have this interpolation curve for Port of Dover. And if you compare it with what we use for Antwerp, you can see the difference. It's clearly evident. Now, required depth is 10.3 meters as per the question here. Now, the charted depth at that point is 5.4 meters. What shall make up for the difference between the charted depth and the required depth? The differential will have to be made up by the height of tide. So
To achieve a depth of 10.3 meters, we shall require a height of tide of 4.9 meters. Okay, so you see beta, in this particular question, now we need a height of tide of 4.9 meters. बिकॉज जब 4.9 मीटर्स की हाइट ऑफ टाइड होगी तभी इस लोकेशन पे डेप्थ 10.3 मीटर्स हो पाएगी. सो यू सी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी डिड. So in the first question we were given a particular time and we wanted to find out what is the height of tide at that particular time. Now they have given us a height of tide and we have to find out at what time it is happening. So it is totally opposite to what we did in the first example. So let's go ahead and see how this is done. This is the daily prediction which we extracted a while back for 3rd of March. Now we get going with the plotting. But before we get going with the plotting, we need certain more information like the duration of tide, range of tide. So since we want this time after 0600 hours, so if you see this daily prediction, obviously the time we are looking at is the time when the required height of tide shall be 4.9 meters between the low water at 5:43 and high water at 10:41. So these two would be the tides of interest. So we have the low water at 5:43. यहाँ पे क्वेश्चन है Height of low water tide is 1.1 meters. Go ahead beta. सर आपने बोला था कि हमेशा हम हाई वाटर के बाद वाला टाइम लेंगे शायद पिछली क्लास में, तो हम ये 1041 और 1800 के बीच में नहीं लेंगे सर? बेटा हाई वाटर के बाद वाला टाइम लेंगे ऐसा नहीं बोला था. मैंने ये बोला था कि टाइम को हमेशा हाई वाटर के रेफरेंस में लिया जाता है. वो हाई वाटर के पहले भी हो सकता है, वो हाई वाटर के बाद भी हो सकता है. लो वाटर के रेफरेंस से टाइम को नहीं लिया जाता. ओके सर, फिर तो हम ले सकते हैं सर ऊपर वाला भी. राइट. सो यहाँ देखो आप डायग्राम के बीच में यहाँ पे उन्होंने हाई वाटर लिखा हुआ है. तो ये जितने भी इंटरवल हैं +1 +2 +3 -1 -2 -3 ये किस पे डिपेंडेंट है? ये हाई वाटर पे डिपेंडेंट है. इनका लो वाटर से कोई लेना देना नहीं है. यस सर, अंडरस्टूड सर. और फिर वो 0600 है ना सर, तो टाइम तो 0543 से 1041 के बीच में ही आएगा ना ये? नहीं बेटा, हम 0543 की रेफरेंस लेंगे ही नहीं, हम 1041 की रेफरेंस से ही निकालेंगे. आगे आगे आएगा, आप चेक कर लेना. ओके सर. हम जब टाइम निकालेंगे तो 1041 के रेफरेंस में निकालेंगे. या तो 1041 में कुछ ऐड करेंगे या 1041 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 1041 ही हाई वाटर का टाइम है. हम लोग 543 में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाले नहीं हैं. ओके सर, गॉट इट सर. मैं तो रेंज के लिए बोल रहा था, टाइड की रेंज निकालना. जो रेंज है बेटा दैट इज डिसाइडेड बाय कि जिस टाइम के लिए आपको चाहिए. अब हमें चाहिए हाइट ऑफ टाइड 4.9 मीटर 6 बजे के बाद. तो आप देखो 543 पे लो वाटर हो रहा है, 1041 पे 6 मीटर का हाई वाटर हो रहा है, तो 4.9 मीटर तो 1041 के पहले आ जाएगा ना. हाँ सर, पहले आ जाएगा. वेरी गुड. सो इसीलिए हमने 543 और 1041 इन दोनों को पिकअप किया है. अब 4.9 1041 के बाद भी आएगा, लेकिन हम उसे नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें अर्लीस्ट टाइम बोला है आफ्टर 6 o'clock. यस सर. क्लियर बेटा? चलें आगे. यस सर. वेरी गुड. We have high water at 10:41 with height being 6 meters. Quickly, please get the duration of the tide. I'm sure you'll agree the duration is 4 hours 58 minutes. Likewise, please do get the range of tide
range of tide is 4.9 meters. So beta, just write down these times and heights from your table. Don't look at the screen and copy it, no use. From your table, you write down the time and height of low water and high water and calculate the duration of tide and also calculate the range of tide. ये दोनों काम आप अपनी नोटबुक में करो अभी and let me know once you are done. Okay, sir. Okay. Anybody stuck, beta? Everybody got it up to here? Very good, beta. Great. So we have the duration of tide, 4 hour 58 minute. We have the range of tide, which is 4.9 meters. अब बेटा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जो हाइट ऑफ टाइड हमें चाहिए वो भी 4.9 मीटर है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग. और जो रेंज ऑफ टाइड आई है वो भी 4.9 मीटर है, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. फॉर्चुनेटली दोनों मैच कर गई हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Right. So let's now proceed ahead. Now, in the previous question, we had the interval because we knew the time and we could start from the baseline and go up and come up to this scale. In this case, we have the height of tide that we would like to have. So in this case, we have a starting point on this scale. So let's draw the interpolation line first. We mark off low water of 1.1 on the lower baseline scale. We mark off high water out here on the upper scale. We join them with a straight line. We get the baseline. So beta, please pick up your diagram now and mark off these low water and high water heights and draw the interpolation line. Let me know once the line is there on your chart. Done, sir. Very good, beta. Anybody stuck up to here, not able to move ahead? Great, very good. Now we identify this required height on this scale of 4.9 meters. So this is the required height of 4.9 meters. This is the first step now, beta. Whatever height is required, we identify that height. So हमने ये 4.9 को अपने स्केल में आइडेंटिफाई कर लिया है. We follow the reverse order this time. So from this 4.9, we come vertically down to the interpolation line like this. Now where it hits the interpolation line, from where we go horizontally to this curve. Now when we go horizontally to this curve, we could stop here on the left side of it, or we could go to the right of it. Now you have to see whether your time of occurrence is before high water or after high water. ओके. सो अब बेटा हमें इंटरपोलेशन लाइन पे जहाँ पे भी ये वर्टिकल लाइन ने आके टच किया है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे कर्व को दो जगह पे कट कर सकती है. एक तो यहाँ पे लेफ्ट हाई वाटर के लेफ्ट साइड में, और दूसरा यहाँ पे हाई वाटर के राइट साइड में. सो कैन यू थिंक एंड टेल मी वेयर शुड वी स्टॉप अवर हॉरिजॉन्टल लाइन? लेफ्ट में स्टॉप करें या राइट में स्टॉप करें? कहाँ स्टॉप करें? लेफ्ट में, सर. वेरी गुड, लेफ्ट में स्टॉप करेंगे. एंड व्हाट इज द रीजन बेटा, राइट में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हाई वाटर के बाद अर्लीस्ट में तो लेफ्ट में है ना. वेरी गुड बेटा, बिकॉज जो राइट साइड का टाइम आएगा वो हाई वाटर के बाद का टाइम है. हमें अर्लीस्ट टाइम चाहिए, सो हमें हाई वाटर के पहले का टाइम चाहिए. सो हम हाई वाटर के लेफ्ट साइड में ही रुकेंगे जहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट करेगी. लेट्स ड्रॉ इट नाउ. Now we can see it's a flood tide. Why? Because 543 was low water, high water is 1041.
so it's flood tide. So the height of tide when it is 4.9 meters, that shall be a time before high water. So that means when we go horizontally from here, we'll be stopping on the left side. That means before high water. So we go to the left up to the curve. And what we find is that there is only one curve here. So the question of interpolation, extrapolation does not arise. So we hit the curve. In this case, it is the spring curve here. So we go and hit here. So don't worry about the range now, because whether it's 5.9 spring here and 4.9 for our case, when there is only one curve, you shall come up to the curve that is there. Now from here, you come vertically down onto the base scale and you read off this interval from here. And the interval happens to be, when you read up from here, it's 1 hour, 40 minutes before high water. Okay, so just do this exercise on your plot beta. Let me know once you reach up to 140. सर मेरा 1 hour 50 minutes आ रहा है. Sir, mine is Okay, coming beta. 1 hour 55 minutes. 155. Yes, sir. Okay. A little bit of error is possible because of the distortions in the photocopy also. How much are you getting, beta? सर ये approximately 1 hour 40 minutes ही आ रहा है मेरा. Okay, all right. सर मेरा 50 आ रहा है. Okay, beta, that's fine, no problem. पर ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसके मार्क्स कटेंगे. नहीं बेटा, सम डिफरेंस इज अलाउड बिकॉज ये जो डायग्राम है इसमें विजुअल इंटरपोलेशन भी अलाउड होती है. सो लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस हियर एंड देयर शुड बी फाइन टिल द टाइम योर वैल्यूज इंटरपोलेशन डायग्राम इज करेक्ट. Okay, so shall we move ahead, beta? Everybody reached up to here? Anybody still stuck? Okay, great. Let's go. It's 1 hour, 40 minutes before high water. So that means the required height of tide shall be 1 hour, 40 minutes before high water, which is at 10:41. The interval is now obtained from the plot, and it's 1 hour 40 minutes before high water. And what is the time of high water? 10:41. So then what shall be the time when we'll have the required height of tide of 4.9 meters? Obviously that shall be 10:41 minus this interval, and the time happens to be 0901 hours. So at 0901 hours, you can expect that height of tide of Dover, where the charted depth is 5.4 meters, would be 4.9 meters, making the depth of water as 10.3 meters. Okay, so 0901 hours you will have the height of tide. Go ahead beta. आगे पीछे चलेगा 45 मिनट आगे मेरा थोड़ा ज्यादा आया हुआ है. चलेगा बेटा, चलेगा. You got 145?
हाँ सर इतना का आ गया, हाँ जी सर। That should be okay, not an issue. ठीक है सर। Because हमारी जो मिनिमम रेजोल्यूशन है इस स्केल पे, द मिनिमम रेजोल्यूशन इज 10 मिनट्स. ओके, सो अप टू अबाउट ±5 आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एट ऑल. अगर इससे ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, somebody was getting 150 also. So if you are getting difference more than 5, then just check your diagram once carefully. You will see you have a dotted line curve and you have a solid line curve. So where do we stop our horizontal line in this case? So ऐसे केस में बेटा remember, जो dotted line है, dotted line in this case represents a neap range 3.3 meters, and जो solid line है, solid line represents a range of 5.9 meters. अब हमारी रेंज कितनी आई है बेटा? हमारी रेंज आई है 4.9 meters. So when you go horizontal, the dotted line represents 3.3, solid line represents 5.9. We have to stop at 4.9. So you can do interpolation, visual interpolation will also do, or you can do it by calculator also, and you stop in between these two lines. Right beta? Did you understand? Yes, sir. Okay, so wherever you stop in between these two, you drop a vertical line and you can read off the time before high water. Fortunately, in our question, the area where it touched the graph, we had a single line. So whether dotted or solid, both of them, spring or neap, both of them were at the same point. So there was no need of any interpolation. सर एक Okay. बार इसको अगर सर फिर से हम बता देना सर. टाइड अगर 3 मीटर या उससे कम होती तो? हाइट ऑफ टाइड अगर 3 मीटर से कम होती, 3.3 से कम होती, राइट? यस सर, तो हम नीप टाइड रहते ना, नीप वाला कर्व, डॉटेड कर्व. एग्जैक्टली बेटा, जैसा हमने शुरू में देखा था एक्सप्लेनेशन में कि अगर कभी भी आपकी रेंज नीप रेंज से कम हो जाती है, एनीथिंग लेस देन 3.3, यू विल पिक अप द डॉटेड लाइन ओनली. हम लोग डॉटेड लाइन के बाहर नहीं जाते हैं. एंड सेम वे अगर आपकी हाइट जो है वो 5.9 से ज़्यादा हो जाती है, then you will always pick up the solid line. We don't go outside the solid line. Okay बेटा? Okay. और बताओ बेटा, सर और क्या डाउट्स हैं? बेसिकली सर इसके लिए हम रेंज को देखेंगे, जो टाइड की जो रेंज है That's कितना से right. कितने तक वेरी कर रही है. Exactly. We will see the range of tide to interpolate between the dotted and solid lines. Range of tide. ओके सर, और किस केस में सर इन दोनों के बीच में हम लेंगे? I didn't get you बेटा. Ask again. सर वो कौन सा केस बनेगा जिसमें सर ये डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन के बीच में हम इंटरपोलेट करेंगे? बेटा जो अभी हमने डिस्कस किया, let us say you are looking for a height of tide of 3 meters. ओके Okay. सर. अब जब 3 मीटर से आप वर्टिकली डाउन आओगे and you go horizontal after the interpolation line, you will see that dotted and solid line are at different locations. So now Yes, we sir. need to interpolate and pick up a point between these two. Okay, is it sorted out beta, your doubt? ओके सर, 3 के लिए आएंगे तो इंटरपोलेट करेंगे. ओके. Not only 3, I just gave you an example. In fact, any range between, let us say, about 4.5 meter height से लेके up to, let us say, almost low water, that is 1.1 meter. So any height of tide between 1.1 and 4.5, you will need to interpolate, because इस height के बीच में आप देखोगे दोनों के दोनों कर्व जो हैं ये अलग अलग हैं. Solid line is different, the dotted line is different. यस सर. Okay. और डाउट बताओ बेटा. तो मिडिल में ले लेंगे सर इनके, नीप के और स्प्रिंग के बेटा, दोनों के मिडिल में ले लेंगे अगर मिडल केस में ऑफ नहीं इंटरपोलेशन लेंगे. करना पड़ तो. मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो दो चीज़ें हैं.
या तो आप इसे विजुअली इंटरपोलेट कर सकते हो। देखो 5.9 और 3.3 में कितना डिफरेंस है बेटा? 2.4 सर। ओके 2.6 हाँ 5.9 2.6 यस। 2.6 5.9 3.3 में डिफरेंस है 2.6 मीटर्स का। तो आप जहां कहीं भी इंटरपोलेट करना चाहते हो, ये पूरी की पूरी लाइन की जो लेंथ है ये 2.6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट 3.3, सॉलिड रिप्रेजेंट 5.9। सो जो गैप है दोनों में, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग 2.6 मीटर लेंथ। ओके, अब आपको देखना है कि आपकी जो रेंज है ये है 4.9। हाउ फार अवे इट इज फ्रॉम 3.3? 1.6 मीटर, करेक्ट? यस सर। सो पूरी की पूरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2.6 मीटर। आपको कहाँ पे रुकना है? आपको रुकना है 1.6 मीटर की लेंथ पे। सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन फाइंड आउट ए पॉइंट इन बिटवीन दीज टू। द पॉइंट विल बी क्लोजर टू द सॉलिड लाइन एंड लिटिल बिट फार फ्रॉम द डॉटेड लाइन। क्लोजर टू सॉलिड लाइन क्यों होगा? क्योंकि 4.9 इज क्लोजर टू 5.9 एंड अवे फ्रॉम 3.3। ओके, अगर ये 4.6 होता, यहाँ पे हमारी रेंज ऑफ टाइड जो है ये 4.6 मीटर होती, तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आती। तो हम सॉलिड और डॉटेड लाइन के बिल्कुल बीच का पॉइंट ले सकते थे अगर ये 4.6 होता। पर अब ये 4.9 है, तो हम बिल्कुल बीच में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा सॉलिड लाइन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। सो दिस इज नोन एज विजुअल इंटरपोलेशन। विजुअली आपने इसको देखा और इंटरपोलेट कर दिया। आप अगर चाहो तो इसे कैलकुलेटर में मैथमेटिकली भी इंटरपोलेट कर सकते हो। यू वांट मी टू शो यू? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। We shall now familiarize ourselves with the pages contained in part 1 of the Admiralty Tide Tables, the volumes that cover the non-European waters. Now this page in part 1 contains daily predictions of times and heights of high and low waters at the standard ports. And the page looks somewhat like this. We have the page of Bombay on display. This page is more or less very similar to the page we had in ATT Volume 1 as well. In this page, on top, we have the port details and its coordinates. Then we have the year of the tide tables, which in this case is 1992. And then we have the time zone for India, which is minus 530 hours. Okay. Now, beta, first exercise we do is, now we know Bombay is in volume 2 or volume 3, some of the volume other than volume 1. So can you find out this page in your tide table booklet? Okay. How will you find out a particular port, beta? सर ज्योग्राफिकल इंडेक्स से देख के फिर पेज नंबर। Very good beta. So just do this exercise. Go to the geographical index of volume 2 and see if Bombay is there. If you don't find it, go to volume 3 and try to find it there, and let me know once you have found out. सर ये वॉल्यूम 2 में है सर। Very good. Volume 2, what is the page number beta? सर बताता हूँ 153 153 सर। 153 सर। Very good beta. So page number 153 and volume 2. So others also able to find it beta? मिला भाई, बॉम्बे वॉल्यूम 2 में ही है। यस सर मिल गया। मिल गया सर, बॉम्बे 442 पेज पे। ओके ग्रेट।
So this is where it is, huh? Anybody still stuck, beta? Anybody not able to find? Very good, great. So let's go ahead. And then we have this main body of the page, which contains the daily predictions. So this page is similar to what we also had in ATT Volume 1. We shall now familiarize ourselves with the diagram that shall facilitate calculation of heights of tide at times other than high water and low water. The diagram that shall be used for all ports of non-European waters is the one that is shown on the screen. There is only one diagram that is used for all ports, in contrast to what we did in ATT Volume 1. If you remember, in ATT Volume 1, every standard port had its own diagram. So in ATT Volume 1, that is European waters, these diagrams are port specific, and other than that, we have the single diagram which shall be used in every case. Now in this diagram, we again have high water at the middle of this baseline. To the right of it, we have this +1 hour, 2 hour, 3 hours with plus prefixes. So that's interval after high water. To the left of it, we have interval before high water. Then we have the chart datum out here, this line representing chart datum. Then we have the scale for height of low water. And we also have the scale on top for height of high water. Please pay attention that there are two scales, one from 0 to 4 and 0 to 7 here. So that is the same scale. The other one is 0 to 8 here and 0 to 14 on top. We have to use the largest possible scale depending on the heights of tide involved. And only care that has to be exercised is that whichever scale is being used for marking the height of low water, same scale should be used for marking the height of high water. So please be a little careful here. Okay. So beta, did you understand these two scales which are given in the diagram? यस सर, जो स्केल नीचे यूज करेंगे वही सर सेम ऊपर यूज करना है. Right, that's right, beta. Now, if you look at the bottom, at the low water scale, there are two scales. One is 0 to 4, another is 0 to 8. And if you look at high water, you have again two scales. One is 0 to 7, another is 0 to 14. So let us say for low water, if you are using a scale of 0 to 4, which scale of high water will you be using? 0 to 7 sir. Very good, beta. So you have to be careful. You have to use 0 to 7. Don't use 0 to 4 scale at the bottom and 0 to 14 on top. Otherwise, the question will become wrong. The one unit of your scale should be same whether it is for high water or it is for low water. Sir, can you please elaborate with an example, sir, so that it can be clear? हाँ बेटा, एग्जाम्पल अभी करेंगे. बट इसमें बेटा एग्जाम्पल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप यहाँ पे इंटरपोलेशन लाइन ड्रॉ कर रहे हो और आपने 1 मीटर को यहाँ पे लिया है, where the cursor is right now, which scale are you using? Are you using 0 to 4 or 0 to 8? Sir, 0 to 4. That's right. अब अगर आपने 1 मीटर को यहाँ पे लिया है, हाई वाटर 2 मीटर है, तो उसे कहाँ पे लोगे आप? ये 2 मीटर यहाँ भी लिखा है और 2 मीटर यहाँ भी लिखा है. Which will you take? Left side 2 or the right side 2? Sir, the left side 2 I will take, sir. Okay. अब नीचे आपने 1 मीटर लिया है और एग्जैक्टली इसी के ऊपर यहाँ पे 2 मीटर ले लिया है. Is this making sense? No, sir. No, sir. Which I will take 2, sir. If I will take down 1, then other side I have to take 2, sir. Right. So you will take the right side 2 here. Anyway, it will become clear when we do it in the
examples. So let's move ahead. Tide curves here, these curves are based on duration of tide, 5 hours, 6 hours, and 7 hours. Unlike the curves for ATT Volume 1, which were based on the range of tide. If you remember, there were two curves, a solid curve for spring range and a dotted curve for broken line curve for the neap range. So in ATT Volume 1, these curves were based on ranges. But here, for non-European waters, these curves are based on duration of tide. Okay. So beta, you see these three curves. So this is understood now. These are based on the duration of tides. For 5 hours, we use the innermost curve. For duration of tide, which is 6 hours, we use the middle curve. And for a duration of 7 hours, we use the outermost curve. If our duration is anything in between these values, let us say our duration of tide is 5.5 hours. So then we will go in between the 5 and 6 curves. So exactly in the middle will be our particular curve which we should be using. So in volume 1, this was not based on time. In volume 1, this was based on the range of tide. Clear beta? Understood? Yes, sir. Very good. There are three curves for 5 hours, 6 hours, and 7 hours. This curve, which is now being marked by the blue arrow out here, this is the curve for 5 hours duration. This is the curve for 6 hour duration, middle one, and the outermost is the curve for 7 hours duration. Now, if our interval, or our duration rather, if our duration of tide falls between 5 and 6 hours or 6 and 7 hours, we shall do the linear interpolation, and interpolation can be visually done. But if our duration of tide happens to be outside 5 hours to 7 hours range, extrapolation is not allowed. No extrapolation allowed, interpolation is allowed. Needless to repeat again, this side of the curve is obviously before high water, and this side of the curve is after high water. So have a good look at this diagram beta. Read these points in your mind. Let me know any doubt coming anywhere. सर इसके अंदर स्प्रिंग और नीव कर्व नहीं होता? नहीं बेटा, इसमें स्प्रिंग और नीप कर्व पे हमारी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होती है. इसमें सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइड पे ही कैलकुलेशन बेस्ड होती है. एंड सर हमें मतलब पेपर में एग्जाम में जैसे पता कैसे चलेगा कि ये वाला डायग्राम सही है या फिर वो दूसरे जो पोर्ट वाइज है वो वाला सही है? I didn't get you बेटा. Can you ask again? What is the doubt? सर लाइक जो टाइड का ये ग्राफ है जो हमें दिया हुआ है, हमने जो पहले वाले किए थे वो तो किसी स्पेसिफिक पोर्ट के लिए थे ना. अब ये वाला तो सब पे एप्लीकेबल है, तो ये वाला ही ग्राफ उन पे भी एप्लीकेबल होगा जो हमने पहले किए थे. ये जो ग्राफ है बेटा, ये आपको ATT वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के आगे ही मिलेगा. दिस ग्राफ इज नॉट गिवन इन ATT वॉल्यूम 1. तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि वो जो पोर्ट है वो कौन से वॉल्यूम के अंडर आती है. अगर वो 2 और 3 के अंडर आती है तो हम ये वाला ग्राफ यूज़ करेंगे जो अभी स्क्रीन पे हमारे सामने है. अगर वो पोर्ट वॉल्यूम 1 में आती है तो हमें उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पोर्ट के ग्राफ को यूज़ करना पड़ेगा. इसे यूज़ वॉल्यूम 1 के लिए नहीं कर सकते. ओके सर, थैंक यू. ओके. और बताओ बेटा, और डाउट्स? सर हाँ बोलो बेटा. 5th 6th 7th कौन सी कब यूज करेंगे सर? यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं 5 घंटे का कर्व यूज़ करूँ, 6 घंटे का यूज़ करूँ या 7 घंटे का, कौन सा यूज़ करूँ, राइट? हाँ जी हाँ जी.
ओके, अब आपको बेटा उन्होंने एक पर्टिकुलर पोर्ट दी और एक पर्टिकुलर डेट दे दी, ठीक है, कि इसका हाइट ऑफ टाइड निकालो, राइट। अब हमने क्या किया, हम उस पोर्ट में चले गए, हमने उसका जो हाई वाटर लो वाटर का टाइम निकाल लिया, और हाई वाटर और लो वाटर के टाइम का डिफरेंस, दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइड, वो भी हमने निकाल लिया। अब वो जितनी ड्यूरेशन हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आती है उसी के हिसाब से हमने कर्व को पिकअप करना है। अगर हमारी ड्यूरेशन 5 घंटे आएगी तो ब्लू कलर वाला कर्व पिक करेंगे। अगर उस पर्टिकुलर डे उस पर्टिकुलर पोर्ट पे ड्यूरेशन 6 घंटे की है तो हम रेड कलर वाला कर्व पिक करेंगे, और अगर ड्यूरेशन 7 घंटे की है तो हम ग्रीन कलर वाला कर्व पिक कर लेंगे। ओके बेटा, हाँ सर। गेटिंग क्लियर? यस सर। राइट, और बताओ बेटा, और कोई डाउट? वेरी गुड, ग्रेट, लेट्स मूव अहेड नाउ। यही मेन डिफरेंस है वॉल्यूम 1 में और बाकी के वॉल्यूम्स में, कि जो ये डायग्राम हम यूज़ करते हैं ये डायग्राम अलग है। So once you have understood this, rest of the procedure is more or less the same. So let's go ahead. Having completed the familiarization process, now let's solve some questions and apply what we have learned. Find out the height of tide at Suez at 1100 hours GMT on 28th April 1992. Okay. So बेटा हमें अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया है, सुएज पोर्ट। सो पहली एक्सरसाइज ये करो बेटा, मुझे ये बताओ ढूंढ के कि ये कौन से वॉल्यूम में आता है। इज इट इन वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 1? सो एवरीबडी ओपन अप योर टाइड टेबल्स, लेट मी नो वेयर डज दिस पोर्ट लाई। वॉल्यूम 2 में आता है, पेज नंबर 111। वेरी गुड, let others also calculate, others also find out. So everybody got it beta? Anybody facing any problems? मिल गया सर। Yes, sir. So is 111. sir. Very good beta, great, let's move ahead. Now, Suez being in ATT Volume 2, we go to the geographical index of Volume 2, which is alphabetically arranged. So we reach Suez, and when we reach Suez in the geographical index, we find Suez is in bold and capital letters, implying Suez is a standard port of ATT Volume 2, whose predictions are on page 111. So from here, we go to page 111 of ATT Volume 2, and we get the information for Suez. Here we pick out the daily predictions for 28th of April, and you can see this is the information for 28th April. Okay, so just note down this question in your notebooks beta, and note down these heights and times of tide for Suez on 28th April. Let me know once you are done and we'll proceed ahead. Don't copy it from the screen, pick it up from the tide tables.
डन बेटा, चलें आगे। Yes, sir. Okay. Also significant here would be the time zone in which these times are tabulated. Time zone is marked here, we have already discussed earlier, and the time zone used for Suez is -2 hours. What does it mean? That Suez time is 2 hours ahead of GMT, or GMT is 2 hours behind Suez. ओके, सो बेटा ये जो टाइम जोन यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वाई? बिकॉज इन्होंने जो हमें हाइट ऑफ टाइड मांगी है वो 1100 आवर्स जीएमटी पे मांगी है, स्वेज टाइम में नहीं मांगी है, जीएमटी पे मांगी गई है। जो ये डेली पेजेस पे हमें हाइट्स दी होती हैं, दे आर गिवन इन द लोकल टाइम्स, सो दीज आर स्वेज टाइम्स। अब अगर स्वेज टाइम को जीएमटी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम इस टाइम जोन को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? स्वेज के टाइम में अगर ये अप्लाई कर दिया जाए, मीन्स स्वेज के टाइम में अगर -02 आवर 00 मिनट कर दिया जाए तो जीएमटी आ जाएगा, और अगर जीएमटी से स्वेज टाइम निकालना हो तो इसके ऑपोजिट करना पड़ेगा। जीएमटी में 2 घंटे प्लस कर दिए जाएं तो स्वेज टाइम आ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टाइम जोन। इज इट ओके बेटा? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी, हाँ बोलो बेटा। सर तो सर फिर जो जीएमटी टाइम क्वेश्चन है उसको स्वेज टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ बेटा, हम उसी को कन्वर्ट करेंगे स्वेज टाइम में और फिर सर निकालेंगे। ये -200 आवर्स प्लस हो जाएगा ना सर, माइनस जीएमटी है सर, टाइम जोन माइनस में है सर, तो जीएमटी में ऐड होगा, करेक्ट? Correct, it will be added to the GMT to get the Swiss time. Okay, let's move ahead. Now, these times here would be in the Suez Standard Time, or the Egyptian Standard Time, and if we have to deal with GMT, we'll have to convert GMT into the standard time of Suez before we can continue with our calculations. So we just saw that the time zone for Suez is -2. Tide required is for 1100 hours GMT. So we'll have to convert GMT into Suez time. So GMT is 28th April, 11 hours. Zone difference is 2 hours. We know Suez is 2 hours ahead of Greenwich. Therefore, when it is GMT 1100 hours, Suez time shall be 1300 hours. So that means we have to calculate the height of tide at 1100 hours GMT, which is same as Suez time 1300 hours. So is this okay up to here beta? Any doubts up to here? No, sir. No, sir. Very good beta. Let's move ahead. And this daily prediction for 28th, we have just picked up from part 1, page 111 of volume 2. So beta, now we require the Sir, but this whatsoever we are given in volume 2, this daily pages, this is in zone time or sir, this is in GMT time, sir? ओके बेटा, जोन टाइम जो है ये कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। योर क्वेश्चन शुड बी वेदर दे आर गिवन इन लोकल टाइम और जीएमटी। Yes, sir. Yes, sir. That's all. All the tide times are given as local times. Okay, sir. Okay. Nothing is given in GMT. हाँ, अगर कहीं पे GMT लोकल टाइम है तो वहाँ पे GMT will match. बट अदरवाइज टाइड टेबल्स में जहाँ कहीं भी आपको टाइम मिलेगा वो हमेशा लोकल टाइम ही होगा। उसका रीज़न ये है
that let us say you are sitting in Mumbai. आप मुंबई या बॉम्बे का अगर टाइम वहाँ से निकालते हो तो आपको उसमें कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. जो टाइम आपको टेबल से मिला, that is the time as per your country's time when the high tide or low tide will be there. So it is much easy for us to use. अगर सारे GMT में दिए होते तो फिर तो उनको कन्वर्जन करने में ही कॉम्प्लिकेट हो जाता काम. So that's why all these times are given as local times. So that is the standard time of the country. That's right, beta. Where the port is, standard time of that particular country. Yes, sir. Okay, let's move ahead. Now, since we need it for 1300 hours Suez time, so this interval, this time shall fall between this high water at 0842 and low water at 1430. So we'll have to basically work out in this period. Now we have this graph diagram which we just discussed. We have high water at 842 when the height is 1.6 meters. We have low water at 1430 when the height is 0.8 meters. From here we can work out the duration of tide, which comes to 5 hours 48 minutes. And from here we can work out the range of tide, which is 0.8 meters. So beta, just note these values down and work out the duration and range. Let me know if you have any doubts anywhere. नहीं सर. Very good, beta. Let's proceed ahead.